Good afternoon, students. Today we are going to start chapter 4, change in profit sharing ratio. Let us know the meaning of change in profit sharing ratio. The existing partners may agree to share profit and losses in a ratio that is different from earlier agreed profit sharing ratio. बेटा अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं पहले वाले अर्लियर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अब डिफरेंट कुछ रेशियो अगर वो चाहते हैं, इट मींस दिस इज अ केस व्हेन द पार्टनर्स वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके. सेकंड थिंग, when they change their profit sharing ratio, then old partnership comes to an end and new agreement comes into effect. It results in reconstitution of the partnership firm. It means जब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं तो उस केस में जो उनकी ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट था वो उसका एंड हो जाता है और न्यू पार्टनरशिप डीड जो है वो लिखी जाती है विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से. These are the events of reconstitution. A partnership firm is reconstituted in the following cases: when partners want to change their profit sharing ratio, or you can say change in profit sharing ratio among existing partners. इसमें partners आपके वही रहते हैं but they decide to change their profit sharing ratio. Okay. Second case, in case of admission, the new partner is admitted in the firm. That is also an event of reconstitution. Third case, retirement of a partner. When any partners take retirement from the partnership firm or leaves the firm, that is also an event of reconstitution. And fourth case, death of a partner. When any partner dies, that is also an event of reconstitution. When two or more partnership firm amalgamates, that is also an event of reconstitution. अमलगामेशंस मैंने आपको चैप्टर गुडविल में एक्सप्लेन कर दिया था. लाइक मारुति सुजुकी, पहले ये दोनों अलग अलग फर्म्स थी, बाद में ये मिलकर एक अमलगामेशन कंपनी हो गई है, अमलगामेटेड कंपनी हो गई है और उसका नाम हो गया है मारुति सुजुकी. सो अमलगामेशन बी इज अ पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. ओके. Yes, on this slide, formula related to sacrificing ratio is given. The formula is old ratio and new ratio. Old ratio minus new ratio. Old ratio and new ratio both are mentioned in the question and you have to calculate sacrificing ratio. और minus करने पर if balance remain positive, it means one partner sacrifices. If the balance remain negative, means other partner gains. Fine. So यहाँ पर mention भी है one partner sacrifices and other gains. Fine. Firstly, I want to tell you one more thing here. Sacrificing ratio will be calculated in two chapters. First, when the partner want to change their profit sharing ratio, and second, admission of a partner. इन दोनों chapters में आपको sacrificing ratio calculate करना है. Fine. Yes, students. Now here are some adjustments need to be calculated at the time of change in profit sharing ratio. First, determination of sacrificing ratio or gaining ratio. Both ratios will be given in the question. And after getting those ratios, you will find sacrificing ratio. In two chapters, we will calculate sacrificing ratio. First chapter, change in profit sharing ratio. We will find sacrificing ratio. In case of admission, we also will find the sacrificing ratio. Fine. And gaining ratio will be calculated in case of retirement and death. And second adjustment we have to make here, accounting treatment of goodwill. In the previous chapter, we have learnt about the calculation, about how to calculate the value of goodwill. And here we will learn about its treatment. Third, accounting of reserves, accumulated profits and losses. Here we will also learn about the treatment of reserves, accumulated profits and losses.
And next revaluation of assets and reassessment of liabilities by preparing the revaluation account. And last, which is being done here, that is adjustment of capital. If the partners want to change their capital, that adjustment will also being made here. Okay. Now on this slide we will learn about the treatment of goodwill. If there is existing goodwill, it means existing goodwill means the goodwill given on the asset side, that is called the existing goodwill or old goodwill, यानी पुरानी goodwill जो already कहाँ पर है, बैलेंस शीट में asset side पर है. When existing goodwill is written off, in that case it is clearly mentioned in the question they do not want to continue the firm with the same amount of goodwill, then it means we have to write off that goodwill. हम उसे write off कर देंगे. और write off करने के लिए मैंने आपको बोला था पुराने पार्टनर्स पुराना रेशो. रिमेंबर दिस थिंग, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो. सो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. एंड सेकेंड थिंग, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जब इसे आगे अपनी नई फर्म की बुक्स में शो करना है, देन एंट्री विल बी पास्ड गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ if you want to distribute that amount of goodwill in gaining partners or sacrificing partners, you need to calculate sacrificing ratio. So in your working note you have calculated sacrificing ratio. Okay. Now when the goodwill is raised and written off, when the goodwill is raised, it is very very important. If it is given in the question that goodwill amount is raised or written off word is given there, it means you will not distribute the goodwill. Firstly you have to write off the goodwill in old partners in old ratio, and with the same amount of goodwill you will write off that amount of goodwill in new ratio. So first entry will be passed goodwill account debit to partners capital account or current account in old ratio. Goodwill amount will be distributed or credited in old ratio. And second entry you will pass here partners capital और current account debit to goodwill account, reverse entry pass कर देंगे. But here you have to distribute the goodwill or debited the goodwill in new profit sharing ratio. Fine. Now here we are learning the treatment of accumulated reserves or accumulated profits. When any amount of reserves like workman compensation reserve, accumulated profits or investment fluctuation reserve, statement of profit and loss amount is given in the liability side of balance sheet, then we will distribute that amount in old partners in old ratio. Then entry will be passed accumulated reserve. Accumulated reserve में any type of reserve like investment fluctuation reserve, workman compensation reserve, general reserve account debit to old partners capital account, right? Then old partners in old ratio. जितनी भी लायबिलिटीज की टर्म्स होती हैं उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन जर्नल एंट्रीज में जब हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनका बैलेंस क्या हो जाता है, डेबिट. इसीलिए रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. When the partners do not want to show accumulated losses in the books of new firm. Now what are accumulated losses? Like deferred revenue expenditure, preliminary expenses and statement of profit and loss account balance. Here I am telling you about the statement of profit and loss account balance. That amount is always shown in the asset side. Okay. यानी ये लॉस है. अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एसेट साइड में गिवन है, इट मींस इट इज लॉस, इट इज अ लॉस. सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. एसेट साइड का बैलेंस डेबिट होता है. देन व्हाइल कंडक्टिंग द एंट्री विल बी पास्ड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, to advertisement account. Any one of them is given in the question, then you will pass the journal entry like this. Okay. Now
On the 10th slide, there is a distribution of funds and other balances which are shown in the capital account. There are two sides shown on this slide. First a debit side and second is credit side. The following balances are being shown on the credit side of capital account. First, general reserve, reserve fund, reserve for contingencies, workmen or employee compensation fund, statement of profit and loss account, investment fluctuation reserve account and revaluation profit. ये जितने भी बैलेंसेस है, ये रिजर्व्स हैं, ये सब जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स में तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, राइट, वाइस वर्सा. और कुछ ऐसे बैलेंसेस हैं लाइक लॉसेस होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस इन बिजनेस हो गिवन इन द बैलेंस शीट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो या फिर रिवैल्यूएशन लॉस हो. ये जितने भी बैलेंसेस हैं ये पीसीए यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं. फाइन. Now on this slide you will learn which amount are being credited in partners capital account and which are debited in partners capital account. You have to learn all these terms. Okay, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, ये सब अमाउंट जो डेबिट साइड में मैंने शो किए हैं ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाएंगे when you will prepare the partners capital account, and when you prepare the PCA then these amount will be credited in the capital account. You just learn all these terms. Fine. Now after change in PSR means profit sharing ratio for accumulated profits or when these are to be retained in the books of new firm, अगर पार्टनर्स न्यू फर्म की बुक्स पे इन अमाउंट्स को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कौन से अमाउंट्स को, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जनरल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल दीज बैलेंसेस इफ are being carried forward by the partners, then following entry will be passed: gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account, right? Revaluation of assets and reassessment of liabilities. This situation has two cases. If the partners want to record the new values in the books of new firm, then we will prepare revaluation account. If the partners do not want to record the revised values in the books of new firm, we will pass a single entry, that is gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. Understood? अगर पार्टनर्स रिवाइज वैल्यूज को अपनी न्यू फर्म की बुक्स में शो करना चाहते हैं तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. अगर पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यूज या न्यू वैल्यूज को अपनी न्यू फर्म की बुक्स में शो नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं, सिंगल जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसे एडजस्टिंग एंट्री भी बोलते हैं, और वो एडजस्टिंग एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट.